हेलो गाइस, आज हम आए सिमटैक की फिक्स करने के लिए RR310 पे। तो काम चल रहा है। तो ये पूरा टेम्पररी वायरिंग किया है भाई ने और ये फिक्स कर रहा है स्विच। देयर इज़ नो अदर अल्टरनेटिव टू दैट फिक्सिंग। तो ऐसा ही फिक्स होना है, नहीं तो नहीं फिक्स हो रहा है ये गाड़ी पे। बट भाई ने डिवाइस कर दिया है एक रास्ता। ये टेम्पररी वायरिंग है। सो हमारे संजय भाई और वंशी ने गया है एक वायर लाने के लिए। तो वायर आते ही मैं दिखा दूंगा पूरा वीडियो कैसे बनेगा। ये आ गया वायर। स्विच भी अच्छा बैठ गया। भाई ने बिठाया। इतना एक्सपेरिमेंट किया उसके साथ। तो पैटर्न स्विच यहाँ पे बैठा है और पैटर्न मॉड्यूलर यहाँ पे बैठा है और स्विच यहाँ पे। तो वो वाला टेस्ट इंडिकेटर है जो दिख रहा है नीचे, टेस्ट इंडिकेटर है। असली पैनल का इंडिकेटर तो ऐसा ही है। एंड दिस साइड इट्स नॉट रिमूव। One thing I like about this guy's work now, he is doing it very carefully. I just want it to stop because I miss you so much. I miss the way we touch and I need to make it stop. But I still the bike is almost ready. Fixing is going on, properly insulated and everything. तो हमारा भाई ने कंप्लीट कर दिया, फिक्सिंग भी हो गया। अभी ऑन करेंगे 1 मिनट में। If only you could see me now. If only you could tell me why you disappeared, you made me cry. So don't come back. Oh, you never. So here I am finally. I wanted to test this at night. And this looks beautiful. I'm in the middle of a highway, so please ignore and please मुझे माफ़ कर दे जो भी आवाज़ आ रहा है हाईवे का। पर I wanted to test this at night and looks beautiful man, beautiful. ये खाली एक पैटर्न है। I'll just try to show you all the 20 patterns from the front of course. This is one pattern and जो शकील भाई ने इसको किया है, पूरा वायरिंग को इतना छुपाया है जैसे लगता है इट्स पार्ट ऑफ द बाइक। आई चेंज द पैटर्न एंड ये देखो दूसरा पैटर्न। और एक बार प्रेस करो।
in the clouds, yeah. Like 10 million explosions. Whatever happened to the picture? The one where you and I were perfect. Like if heaven was a time lapse. Play the story where we'd end up. Would you pause it for a second before this thing was over? Would you come a little closer before this thing is over? Would you come a little closer? Never know till it's gone. 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 Till it's gone. Till it's gone. Till it's gone. Never know till. But there is one problem when you fix to RR310 at least from Hyderabad. मुझे नहीं पता है और मुझे नहीं दिखा कहीं पे कि कोई और ने किया है ये. This is mounted properly, but the problem is, if you observe, we have not linked this with the standard indicators here. तो जब भी ये ऑन रहता है, जैसे आप देख रहे हो, we cannot see any indicator lights. And एक और प्रॉब्लम है, अगर इंडिकेटर ऑन किए हो, that works independently. तो पैटर्न चल रहा है और इंडिकेटर भी जल रहा है. एंड ये इंस्टॉल करने के बाद जिस तरीके से इसने किया है, हमारे शकील भाई ने किया है, अगर ये ऑन करके अगर भूल गए तो मान लो देयर इज़ अ प्रॉब्लम कि पावर कट ऑफ हो रहा है, मतलब कहीं तो पावर बैकफायर हो रहा है. तो इसीलिए व्हेन दिस इज़ इंस्टॉल्ड वी शुड नॉट बी यूजिंग दिस एंड एटलीस्ट वी शुड नॉट स्विच ऑफ विद दैट टर्न ऑन. तो वो एक प्रॉब्लम है. और जैसे कि मैंने बताया है, पहला प्रॉब्लम, इट इज़ नॉट लिंक्ड विथ द स्टैंडर्ड इंडिकेटर सेटअप. तो दैट इज़ एन इंडिपेंडेंट मॉड्यूल. इट इज़ लिंक्ड टू द इग्निशन लकीली. नहीं तो अगर बैटरी को कनेक्शन दे देते ना तो एनीबडी कैन स्विच इट ऑन इवन इफ द बाइक इज टर्न्ड ऑफ. तो उसको नहीं किया है हमने. दैट इज़ प्रॉपरली कनेक्टेड विद द इग्निशन बट नॉट विद द इंडिकेटर्स. वो कर नहीं पाए हम. तो दैट इज़ वन बैकड्रॉ. अगर ये वीडियो कोई देख रहा है और इफ एनीबडी हैज़ नॉलेज अबाउट RR310 एंड हाउ टू गिव अ वायरिंग सेटअप, प्लीज़ एक वीडियो बना के मुझे दिखाइए कैसे करना है. आई विल चेंज माई वायरिंग सेटअप फ्रॉम हैदराबाद. तो जो भी हैदराबाद से करवा रहा है ये, दिस इज़ द फर्स्ट बाइक फ्रॉम हैदराबाद RR310 टू हैव दिस सेटअप. दिस इज़ द यूनिवर्सल सिमटैक फ्लैशर मॉड्यूल. अगर किसी ने किया है कहीं और से, कहीं और लोकेशन से, प्लीज़ मुझे बताएं, हमें बताएं और हेल्प करें. थैंक यू गाइस.